Hello, friends, a warm welcome. And in this series of environment concepts that we are taking up, especially with respect to the mammals, it's really going to help you in understanding and also going to mark correct answers, whether it is state services, whether it is UPSC, or whether it is any kind of personality test question. What I can assure you is that mindful hearing is really going to help you in understanding what is required in examination. Go for the previous three lectures also, if I'm not wrong, maybe two or three, whatever it is, then it will be making a sense to you that how it is important. Every year questions are coming and you must understand. Just no need to mug it up. So I'm taking you to a visual and a mindful journey. Today I'm going to talk about odd-toed ungulates, or you can say ungulates, whatever you want to pronounce. So number of species are three. Largest is rhino, very important for us. Smallest is khur. Most common is kiang, and most endangered is rhino only. Niche occupancy, occupancy when we talk about, then rhino and equids. You can see the tree over here and there. This is how our beautiful, awesome asset. It's the grace of nature that we have rhinos. So greater one-horned rhino, it is, a calf is falling on the heels of mother in burnt grass, Kaziranga, Assam, and you can call it perissodactyl toe forms. So rhino is left, three, and equid is right. Equid is right, that is one. Rhinoceros species. So you have black rhinoceros, white rhinoceros, Sumatran rhinoceros, Javan rhinoceros, and greater one-horned rhinoceros. That means they are found beyond India also. So what is an ungulate? It is common parlance, you call it a hoofed animal. Hoof is a modified nail. Hoof यानी खुर जिसको हम हिंदी में कहते हैं. Ungulates are grouped into arti, I said artiodactyl and perissodactyl order. There are two orders based on whether they are even toed or odd toed. So recent studies, they are grouping elephants, hyraxes, and sea cows as peningulates, a close relatives of hoof animals. However, this relationship is genetic and not based on morphology. Morphologically, obviously, the foot of elephant is very different from that of rhinoceros. And artiodactyls in India comprise mountain goats, sheep, wild cattle, deer, chevrotins, antelopes, and wild pigs. For about that, we will be talking later on. So 18 species of ungulates, that is equids, rhino, and tapirs. उनके odd numbers हैं and उनके odd number of toes हैं. That is why you आप कह सकते हो we are going to study them, and most of them are endangered and they are known as perissodactyls. Of those found in India, equids have single toe, rhinos have three toes. Rhinoceros are mega herbivores with one or two sharp conical horns at the tip of the nose. उसके बारे में बात करेंगे. Horn of rhinoceros. There are 5 species of rhinoceros in the world, which 2 are African and 3 are Asian. So what is an equid? Equid are specialized grazers, घास चरने वाले. उसके अंदर horses, zebra, asses आ जाएंगे. Originated in North America 55 years ago. सबके सब odd-toed elongates हैं, and then they put their entire weight on the central toe, which give them a springy, gait. Therefore, speed in the flight. They run very fast. So they are non-ruminants and long incisors. They have specialized molars. So सारे equids जो है वो एक social animal, social behavior reflect करते हैं in large groups, and they run over large stretches with grace and power that is unique to the family. इंडिया में क्या मिलता है, लेकिन सोचने की बात ये, इंडिया में तिब्बतन वाइल्ड एस मिलेगा जिसको हम कियांग भी कहते हैं. तिब्बतन वाइल्ड एस इज कॉल्ड कियांग, एंड इंडियन वाइल्ड एस को जिसको हम कहते हैं खुर. तो डिस्पाइट द फैक्ट ये वो खुर नहीं है, वो खुर दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है. डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर क्लोजली रिलेटेड, द डोमेस्टिक हॉर्स इज कॉल्ड इक्स फेरल कैबलस, और वाइल्ड हॉर्स उसको कहते हैं प्रेसवेल्स्की. डोमेस्टिक डोंकी, वाइल्ड एसेस और जीब्रास सब के सब मार्जिनली डिफरेंट हैं एक दूसरे से. वाइल्ड एसेस की अगर हम बात करें, वो डोंकी से बड़ा होता है लेकिन घोड़ों से छोटा होता है. उनके कान भी लंबे होते हैं, डोंकीज और हॉर्सेस से ज्यादा होते हैं. बोथ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एसेस, उनके हेयर शॉर्ट होते हैं और उनकी जो पेंट ब्रश टिप होती है टेल के ऊपर वो होती है. हॉर्सेस एक फ्लोई सिल्की एकदम चमकदार उनकी काठी होती है, एंड उनका हॉर्नी पैड होता है जो एक मतलब व्हाट आई शुड से कि उनको एक अलग ही लुक देता है. वाइल्ड एसेस आर प्लेन कलर्ड एक्सेप्ट फॉर देयर काउडल स्ट्राइप, यानी जो उसके ऊपर से आप कह सकते हैं कैसा दिखता है. डोमेस्टिक एसेस की हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स होती हैं शोल्डर्स के ऊपर, कई बार लेग पे भी हो सकती हैं. बट देन ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स के अलावा आप कह सकते हो जीब्रा को डोंकी से जब कंपेयर करते हैं तो जीब्राज आर यू नो थोड़े बड़े होते हैं एंड ऑलवेज हैविंग ए ब्लैक टिप टू देयर नोसेस. अगर आप नाक देखोगे तो उस पे एक ब्लैक ऐसे आएगा, और उनके ईयर्स भी राउंडेड होते हैं. लेकिन
Like donkeys, they share hairs on the tail and mane. So मैंने आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की कोशिश की बिटवीन हॉर्सेस, डोंकी एंड ऑब्वियसली एसेस. ये कभी ना कभी एग्जामिनेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. हेयर वी आर शोइंग यू काजीरंगा असम में. आप देखिए प्रेजलिस की हॉर्स ये दिखाया. इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे देन यू हैव वन पिक्चर इज ऑफ राइनोसोरस. दैट इज, क्या आप मुझे बता सकते हैं इट राइनोसोरस ऑड टोड और इवन टोड? और साथ में वाइल्ड बेफेलो. वाइल्ड बेफेलो डेफिनेटली इज इवन टोड. फिर हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं. देखिए दिस इज हाउ द इवोल्यूशन हैव टेकन प्लेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स Paleocene period, then Eocene, Oligocene and Miocene, and then finally you have uh, Pleistocene. So this is how it is shown how rhinoceros and horses, asses, they have evolved over a period of time from 65 million years ago to 1.5 million years ago. Evolutionary tree of Indian odd-toed elongates आप अगर देखेंगे तो ऊपर दिखाया, और ये आपका जीब्रा है. तो जीब्रा जैसे हमने अभी बात की, ये है जीब्रा का एक फोटोग्राफ. When moving further, let's see. These are donkeys and domestic pony कह सकते हो आप इसको, जो हमारे यहाँ मिलते हैं, सामान ढोते हैं, आपको मिल जाएंगे. एंड देन सेकेंडली इज एन एग्जांपल ऑफ तिब्बतन वाइल्ड एस. देखिए कियांग जिसको हमने कहा, देखिए थोड़ा फर्क है. अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो कियांग में और घोड़े में थोड़ा ही फर्क मिलेगा. लेकिन कमाल की बात ये कि एग्जामिनेशन आपसे नहीं पूछने वाला एग्जैक्टली ऐसा फोटोग्राफिक वे में. यू शुड जस्ट नी द बेसिक फैक्ट्स. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू हैव अ लुक एट. ये राइनोसोरस हूफ है. ये देखिए हिंड गट फर्मेंटर्स कैसे होते हैं. एंड पेरिसोडक्टल स्कल्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए राउंडेड ऑर्बिट है, इंटरडेंटल स्पेस है, प्रोनाउंस ऑक्टिपल क्रेस्ट है. और ये देखिए आपका इक्विड का ऊपर जो दिखाया है और नीचे आपका राइनो का दिखाया है. दिस इज द राइनो वन. दिस इज प्रोनाउंस नेसल बोन, नो इंटरडेंटल स्पेस, रॉबस्ट मैंडिबल. सो यू कैन जस्ट बी क्यूरियस टू नो, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर किया. जब हम बात करते हैं लोकोमोशन की, तो इक्विड्स जो हैं दे आर एक्सेप्शनली स्विफ्ट. दे रन अबाउट 40 to 45 किलोमीटर पर आवर. लेकिन राइनोसोरस भी कोई कम नहीं है. अनलाइक इक्विड्स जिनके हील एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करते हैं, इन केस ऑफ राइनोसोरस ऐसा नहीं है. बट राइनोसोरस कैन आल्सो रन एटलीस्ट 55 किलोमीटर एन आवर. सो कियांग भी ओकेजनली आपको मिलेगा दौड़ता हुआ, फ्लैट पैस्चर्स में भी मिलेगा, वैली में भी मिलेगा. अल्टीट्यूडनल मूवमेंट आप कह सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन द वार्मथ, इट डिपेंड्स ऑन कोल्ड डेज. वैलीज में कब जाएंगे, ऊपर जब ठंड बढ़ जाएगी तो नेचुरली दे विल कम डाउन. जब आप आते हैं डाइट और फॉरेजिंग में, then equids are predominantly grazers, as I told you. They are adapted to survive on coarse food, and kiangs, they feed on grasses and sedges. Stipa, स्टीपा एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड है इनके लिए. बाकी आप कह सकते हैं कि खुर जो है वो भी ग्रेजर्स ही हैं, और ग्रास उन्हें अवेलेबल होती है तो वो भी उसको खाना पसंद करते हैं. एंड अगर मान लो नहीं है, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी आल्सो, देन सीड पॉड्स जो फ्रूट्स के होते हैं वो भी वो खाएंगे. और अगर और ज्यादा दिक्कत होती है, दे में ब्रेक द रूट सिस्टम्स, और उससे वो अपना काम चलाते हैं. रेडिंग क्रॉप्स भी एक पॉसिबिलिटी है वेन एवर दे आर एंटरिंग इनटू ह्यूमन हैबिटेट. सो राइनोस जो है वो बहुत ग्रेज भी करते हैं, ब्राउज भी करते हैं, लेकिन प्रेफरेंशली जो है वो ग्रास लैंड के ग्रेजर्स हैं. वो लैंड पे भी ग्राउज कर सकते हैं, इक्विटिक वेजिटेशन पे भी ग्राउड कर सकते हैं. क्यों एक्विटिक वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट समझना, बिकॉज दे हैव द प्रीहेंसाइल लिप. Then rhinos make different kind of communication, vocalizations. फेस टू फेस इंकाउंटर में हॉकिंग करेंगे, स्नॉट करेंगे जैसा होता है, ब्लीड कर सकते हैं, रोर कर सकते हैं. और मूव ग्रंट, मैटरनल कॉन्टैक्ट कॉल को कहते हैं. दे कम्युनिकेट विद सेंट्स फ्रॉम फूड ग्लैंड्स एंड डंग टॉयलेट्स. जो कि दूसरे रैनो आते हैं और उनके उसको वो they've inspected, and that is how rhinos often walk with their nose to the ground. इसीलिए वो scent track कर लेते हैं like dogs. So wild asses on the other hand are large and silent animals. वो जो है ब्रीडिंग या टेरिटोरियल फाइटिंग के टाइम में वो दिखाई देता है, ऐसा कुछ होता है. डोमिनेंट स्टैलियंस जो है वो आप कह सकते हो कि वो ज्यादा चिल्लाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी आप इनको सोशल एनिमल्स में ही काउंट करते हैं, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट सच आइडिया. सी खुर यहाँ पर एक गैलपिंग हाई स्पीड पे दिखाया है रन ऑफ कच्छ में. अनदर एग्जांपल इन गुजरात. देन यू हैव खुर जो है ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया, इट इज ईटिंग ज़ेरोफाइटिक यानी कि डेजर्ट बेस्ड वेजिटेशन एंड सलाइन वेजिटेशन इन रन ऑफ कच्छ. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है. राइनोज आर वेरी गुड स्विमर्स इवन ब्रेस्टिंग ब्रह्मपुत्र रिवर. तो ऐसा नहीं है कि वो डूब जाएगा. हियर राइनो इज बीइंग शोन ग्रेज इन द एलुवियल ग्रासलैंड्स ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क. अगर हम फर्दर बात करें, then this is again Kiang, graze in high altitude trans-Himalayan pastures. Awesome pictures. We must go sometime there and have original views without making any uh,
discomfort to the environment and the ecosystem. So social organization is being shown. That is the point I wanted to share with you. सोशल ऑर्गेनाइजेशन की लेकिन जब हम बात करते थे इक्विड्स जो है वो मोर सोशल है राइनोस से. राइनोस जो है नेचुरली थोड़ा सॉलिटरी होते हैं बिकॉज हॉर्सेज एंड जीब्रास तो हर्ड के फॉर्म में परमानेंटली रहते हैं. जैसा ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स, फिशन और फ्यूजन होता है. कॉन्सेप्ट में फिशन होगा जब जो है when the situation is adverse and then you need to move about and you need to survive on your own, and fusion when there is ample opportunity. So कियांग जो है ग्रुप बनाते हैं, लार्ज हर्ड्स भी बनाते हैं अप टू 500 यू कैन से, बट स्टैलियंस आर लार्जली सॉलिटरी और वो टेरिटोरियल भी होता है. उनका खुर का एक वेल स्ट्रक्चर्ड हैरम की तरह फैक्टर होता है. इवन यू कैन से दैट फैमिली बैंड और बैचलर्स ऐसे करके इनका है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू कैन से दैट व्हेन द हैरम इज बीइंग क्रिएटेड तो अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ेंगे वो. इवन फीमेल कैन मूव फ्रॉम वन टेरिटरी टू अनदर टेरिटरी, लेकिन अपनी टेरिटरी ये छोड़ेंगे नहीं. जबकि राइनो जो है इज अ लोनर. young male join up together और female is there when the calf is nearly 4 years. तो ये एक important point है. और reproductive strategies when we talk about, then the females have gestation period of about 1 year in case of kiangs, and khur also breed in the time period of June to August because this is monsoon time, so more breeding takes place in this time obviously when the food is available, food availability is more. As I already said that खुर जो है वो अपनी फीमेल को जाने देगा लेकिन टेरिटरी को नहीं छोड़ेगा. So the point is that there are different kind of social behavior of different animals and that is really to be seen. So human being के लिए बहुत interesting learning बात है. Rhinos are hesitant breeders with male coming into puberty at 5 years of age and female comes into puberty at 6 years of age, and they associate only for mating, and female gestation period is of 15 months and the young one suckles for 4 years. आप सोचिए 4 years, man, it's quite a deal. So Khur stallions rear up on their hind legs and they bite each other. Run of Kutch. Yeah, again, there is it is showing that how Khur is mating in Run of Kutch, and similarly is the case with the rhino. It is showing how rhino mates his rhino mounts his mate in Kaziranga National Park in Assam. And similarly here you can see that courtship of Khur, how it is biting the neck. It is a kind of a courtship, or you can say पॉजिटिव बिहेवियर, दैट्स व्हाट वी कैन से. हाइब्रिड अगर खुर और डोंकी का करेंगे, देखिए ये रन ऑफ कच्छ में दिखाई दिया, इट्स एन हाइब्रिड ऑफ खुर एंड डोंकी. सिमिलरली राइनो, इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर. राइनो फीमेल विद ट्विंस, वेरी रेयर ऑकरेंस, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन वेस्ट बंगाल. सो you can say that these are very very important and very very uh, very very crucial facts because rhinos are poached primarily for their horn and far east में चला जाता है traditional oriental medicine में, that is pharmacopoeia if you see those, and then it is seen as antipyretic or you can say for fever reducer, and mostly it is also seen as kind of an aphrodisiac. आपको जोश दिलाता है, मर्दानगी दिलाता है, ऐसा कहा जाता है. इसलिए राइनो सॉफ्ट टारगेट है. सॉफ्ट टारगेट क्यों है? बिकॉज इट्स हॉर्न इज फेचिंग पोचर्स एवरी ईयर a lot of money. Rhino is a very very predictable in its habits, very very simple and very innocent animal because it moves through the same path, it uses the same track, and even it is also using the same place to do dung. It is not rhino populations in Assam are easily accessible. They are surrounded by human populations. There is a high density of rhino, therefore rhino protection has become full-time priority for the forest department. And it is dependent upon the human security system and intelligence. That is why rhinos are being saved, otherwise rhino can't be saved. Similarly, domestic livestock are the most serious threat to wild equids. Domestic livestock, because they are taking space, they are taking habitation in Jammu and Kashmir. Yaks and sheep compete for drinking water in the small habitat in Sikkim. These are the real issues. They are the problems. Similarly, diseases. For example, Sura, a parasitic, trypanosome disease. The outbreak was very, 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 very devastating. Assam and West Bengal are taking steps for conservation of rhino in the wild through protection and habitat modification, burning mature grass so that fresh shoots can come up, and they are dredging water bodies also. And after 1984, Union and the state governments of Uttar Pradesh and Assam reintroduced 5 rhino from Assam to Dudhwa National Park in Uttar Pradesh. The project had limited success, but by 2013, you have to check the present figures, rhino figure went up. So in 2006, Wildlife Trust of India and Assam Forest Department, WTI should be Wildlife Trust of India, please cross check, and it restocked Manas National Park by transporting 3 ऑर्फन काव्स टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट. जैसा मैंने पहले बताया था, 4 राइनो उसके बाद मूव हो चुके हैं, 3 और भी ज्यादा हो गए. तो बेसिकली विजन है राइनो 2020 का जो अब तक हो चुका होगा, एंड वी हैव द फर्दर प्रोग्राम्स एंड फर्दर स्कीम्स आर देयर, एंड इट इज एडेड बाय वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एंड इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन. सो मानस से नेशनल पार्क से पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे रिलोकेट किया, एंड देयर आर लोकल एनजीओज एंड ग्रुप्स, दे आर आल्सो हेल्पिंग
and protection of rhinoceros. That is very, very important and very, very crucial for rhinos. See, this is a Kiang carcass, and if I show you horrible picture in which you can say that how someone is attacking rhino also by poaching away their you know by their horn. See, rhino with the horn cut off. It's a very, very devastating picture. It's very, very heart-wrenching scene. High electric tension wires are also a threat to rhinoceros in Pavitra Wildlife Sanctuary, Assam. Similarly, this is a picture which is showing this is khar. Khar is a common kur in cotton field on the edge of Rann of Kutch, and this is how you can say orphan rhino calf being bottled at the Kaziranga National Park. So that's what we discussed. Asiatic wild ass, it is endangered. It is very, very important to understand and best seen at Wild As Wildlife Sanctuary, Gujarat. And as I told you, it is having a dark chocolate color, tail is short, and then coat is length is uniform, ears are long, and have dark brown color. And then we also discussed about its nocturnal. It's a nocturnal feeder, and then distribution is from Little Run of Kutch in Gujarat originally, but then it is decreasing, and then it is being found in the southern and eastern fringes of the Greater Run and eastern Rajasthan. Small population exists in Nar Sarovar White Sanctuary, and the population is cut off from one in Kutch by man-made Narmada Canal. Therefore, उससे भी फर्क पड़ा है. Open salt mud flats, scrublands, grasslands, beds, or small clumps of vegetative grasslands in the run. ये words आपको याद होने चाहिए. Intermixed with the cropland. So that's how feral horses, free-ranging domestic horses, and India में दो distinct populations हैं. First is in Dibru Saikova Wildlife Sanctuary in Assam, other in the Point Khalema Wildlife Sanctuary in Tamil Nadu. ये आपको पता होना चाहिए feral horses. ये जो हैं, although they do not have many wild genes, they are wild in behavior and do not allow cross. See, this is how it is. Icus hominis khur, old stallion in the front and female and subadult male. तो ये इतना तो खैर ठीक है, it's okay if you are aware that's perfectly fine. There is no need to go into too much. Run of Kutch, see, as I told you, it is here in Gujarat, and second one it is showing here. The broad dark stripe with the white edges from main tail base. देखिए, khur, drinking water, Run of Kutch, Gujarat. Similarly, Tibetan wild ass, it is of least concern. IUCN status is there. Kiang is bigger, as I told you, more bigger and broader than Khur. And then distribution is Trans-Himalayan Eastern Plateaus of Ladakh district, Jammu and Kashmir and Sikkim, and also a bit in Nepal, and recently reported from the Trans-Himalayan region of Uttarakhand. So habitat, high open plateau, hill, valley bottoms. Similarly here it is Kiang, bachelor herd. Kiang, solitary stallion, vocalizing, breeding season, Ladakh. Then it is in Kashmir, Adulticus. See one more. It is from So Lahamo, Sikkim. Now talking about the great one-horned rhinoceros, best seen at Kaziranga National Park. IUCN stated is vulnerable and solitary, but it is in pair during breeding, loosely associated feeding groups of females and subadult males at good grazing grounds. The second largest mammal in India after elephant. It is recognized by its large bulk and single horn, as I told you, two large fold of skins across its flanks, and that's how it is. Actual color is slate gray, but it looks ashy because when it is mud over there, and skin is almost hairless because hair is restricted to the tips of small naked tail, tips of its small naked tail, eye tips, eyelashes, or beady eyes. That's all. Hooves are large and three-toed, as I told you, and then you can say that horn weighs around 750 grams only, and newborns are pinkish green color,
And as I told you, they defecate in the same place. They create large toilets over there. They create the same way walking paths or dundies. And rhinoceros do not use their horn to gore victims. Indian rhinoceros is not will not be attacking you, but will be using their sharp teeth to bite off the chunks of the flesh. That is different than the African one. Distribution, as I told you, Tarai Bhabar tracts in northern India, Brahmaputra River basin in northeast, occurs in Assam, Kaziranga, Orang, Pavitra, Manas, and Laikhawa, Burachapuri, West Bengal, Jaldapara, and Gorumala, Bihar, Valmiki, and Uttar Pradesh, Dudhwa. And last is reintroduced one in Bihar is the recent crossover from the Chitwan Parsa ecosystem in Nepal. The population in Manas, as I told you, it is restocked. So you just cross check, but then these are the important parameters and points. Tall alluvial grass, rivers, riverine forest grassland, mosaic. This is very, very important to understand. See, it is here from the back at the Pavitra wild at the Jaldapara Wildlife Sanctuary. This is how it is: large grey body, single horn, and that's how it is. This is how, and this is the area, but this is the way it is reintroduced. Assam, rhino defecates in Tangpile, Kaziranga, as I told you. See how it is. Newborn rhino, a few days old, pinkish skin. See, horn emerging in calf more than a year and old. See, that's how it is. So African horn, if you are in Africa, it is going to hit you with the bull with their horn, but if it is in India, it is going to bite you. That's how it is the difference. The rhinos are one of the most dangerous animals in India. If you are on the foot, especially aware. If you are going to trouble their mother, if you want to separate calf from it, then you are going to have it. The Changthang, Tibet's northwestern plateau extending into southeastern Ladakh, is the Indian Serengeti, and the Kiang is our equivalent of zebra. That is what one more fact I would like to share with you. Serengeti is in Africa. Please check out and find more details about that park. It's an amazing ecosystem. Similarly, is the case with India. See, the hairs are loosely attached to its nasal bone. They are hairs, and horn is densely packed bunch of hairs only, and it's an illegal. It is poached and smuggled. See, that's how it is. We must be aware. So that's how I'm stopping here at the odd toed ungulates. I'll be taking up even toed ungulates in our next interaction. And I hope you enjoyed and you make your own notes in working with these ideas. And we will be taking up the next issue very soon. Be in touch, working smart and hard. And for success, get back to me. Thank you very much.